I'm going to start the endocrine system first gland, that is called adrenal gland. Okay, there are two parts in adrenal gland. First part is known as medulla, second part is known as cortex. Okay, now first point, in medulla it secretes adrenaline. The hormone which is secreted by adrenal medulla is known as adrenaline. Okay, now also known as epinephrine or noradrenaline. Okay, now in cortex region secrete corticoids, cortisone, cortical hormones. This is the name of the hormone which is secreted by cortex region of adrenal gland. It suppress inflammation. What is the meaning of inflammation, sir? The meaning of inflammation is swelling. If any type of injury or internal any damage is happen on a particular area, then for that to be better that inflammation, they act as and they suppress means deactivate the inflammations area, and after activating the cortex region hormone, that is known as corticoids. After activating these hormones, the inflammation region become up to zero level or up to 2 to 3% only. The inflammation which is 98% on a separate area, on a particular area, now after secretion of these hormones they become suppressed, they become low. Okay, now prepare body to meet any emergency situation. This is the medulla region hormone which prepare the body to meet the emergency situation, to fight the body in emergency situation. Which is the hormone? Medulla region hormone known as adrenaline, also known as fight and flight hormone. Okay, now fight and flight hormone. What is the meaning of fight and flight hormone, sir? Fight means to face the situation in danger, and flight to run away. If like that, if dog is barking to us or any particular person, the dog is barking, then what the person will do? They finally run away to avoid the dog cut, okay, to their body. So what they are doing in emergency situation, that is the action which is done by adrenal medulla part, that is done by adrenal gland, and the part is medulla. Fight and flight hormone which is secreted by adrenal medulla part. Okay, more secretion during the time of excited, angry. When our body is more happy, when our body is more sad, that time this hormone is secreted in more quantity. Why? To maintain the stress level, to maintain the what we can say that the excited level, to maintain the angry level of our body. Okay, now stimulated by the nerve ending, stimulated by the nerve ending of autonomic nervous system. Autonomic nervous system, and we also know that we have studied there are two parts, central nervous system and autonomic nervous system. In autonomic nervous system also there are different parts. Okay, so you know better. Now I'm going to discuss that it stimulates the nerve ending of autonomic nervous system. What is the meaning of stimulate? Stimulate means control. It control the autonomic nervous system nerve ending. Okay, now the function. What is the function of adrenal gland? First function I'm going to see, I'm going to explain the first function. Increase the heartbeat. Yes, during fight and flight situation, during emergency situation, this hormone increase our heartbeat. As you know that when dog is run on the back of individual person, they just do this like means their heart will become increase. Why increase? Due to more secretion of this hormone. If hormone is secreted more, then their body will become more what you can say the active to perform the activity. Okay, to maintain that situation, to maintain any critical situation, our body become more fast. Just our heartbeat this like, okay, this like heart is increases heartbeat. Increase blood supply to the muscles and visceral organ. It also increase the blood supply to the muscles and the visceral organ of our body. What is the meaning of visceral organ? Means soft internal organ. Okay, now glucose release is more by liver in blood. Yes, during secretion of these hormones, glucose level increased is more in the
blood. Okay, see here, glucose released is more by liver in blood. Blood में ग्लूकोज जो रिलीज होता है लीवर के द्वारा वो थोड़ा ज्यादा होता है, इन एक्सेस क्वांटिटी होता है, ओके, इस एड्रिनल मेडुला के प्रेजेंस में. नाउ कॉर्टेक्स रीजन, जो कॉर्टेक्स रीजन का हार्मोन है वो टोटल 3 या 4 टाइप का है. तो फिलहाल हमारे पास 2 अभी लिखा हुआ है, नेक्स्ट स्लाइड में भी हम 2 लिखेंगे. मिनरलो कॉर्टिकॉइड्स, दूसरा हो गया ग्लूकोकॉर्ड. मिनरलो मींस मिनरल्स, ग्लूको मींस ग्लूकोज, सेंस इज कमिंग हियर. So mineral regulates mineral metabolism, especially sodium, potassium ions. Means if the system, if in our body the concentration of the metabolism, if the metabolism is maintained in our body, what we can say that what is the meaning of metabolism, what we are doing daily activity, that is our metabolism. Okay, तो उसको सोडियम पोटेशियम आयंस को भी मेंटेन करने का काम करता है. ओके, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, सिंपली यू नो मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स मींस मिनरल्स का कंसंट्रेशन मेंटेन करना. ओके, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स रेगुलेट्स कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स मेटाबॉलिज्म. मींस कार्बोहाइड्रेट का भी मेटाबॉलिज्म मेंटेन करके रखना, प्रोटीन का भी और फैट का भी. ओके, ब्लड शुगर का कंसंट्रेशन इंक्रीज करना. अगर तुमको पता ही है हमारे बॉडी के अंदर जो कॉर्टेक्स रीजन का हार्मोन्स होता है जिसका कि नाम है कॉर्टिकॉइड्स, ये ग्लूकोज लेवल को भी मेंटेन, जैसे कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करना, प्रोटीन को मेटाबॉलिज्म मतलब क्या हुआ, ब्रेक डाउन होने के बाद जो फॉर्म हो रहा है ना, बस उसको मेंटेन करना. दैट इज द पॉइंट टू मेंटेन द मेटाबॉलिज्म. ओके, ब्लड शुगर कंसंट्रेशन इंक्रीज करना, इट आल्सो इंक्रीज द ब्लड शुगर कंसंट्रेशन. ओके, नाउ इन्फ्लुएंस फैट एंड प्रोटीन मेटाबॉलिज्म आल्सो. फैट और प्रोटीन का जो मेटाबॉलिज्म उसको इन्फ्लुएंस करना, उसको प्रभावित करना किसी तरह से, इनडायरेक्टली और डायरेक्टली. ओके, नाउ maintain salt and water balance, it also maintain the salt and water balance in our body. Okay, now adapt body in stress, heart, heat, cold, burns, infection. Sorry, I have told heart, not heat, it is heat. Okay, in our first point is under medulla section, if there is hypersecretion in adrenal gland, means in medulla part, if there is hypersecretion, this means that what is the exact meaning of hypersecretion? Hyper means high secretion. If that gland secrete, high means the amount of hormones which is secreted by gland is more in comparison to normal ratio. Okay, so that is the meaning of hyper and the meaning of hypo. Hypo, low, LOW, and hypo. Okay, that is the meaning. Low means कम secretion और यहाँ पे ज्यादा सेक्रेशन. फर्स्ट पॉइंट, Cushing syndrome. What is the meaning of Cushing syndrome? Cushing syndrome means you have seen in your locality maybe that the person suffering from Cushing syndrome, there the middle region, the stomach region, the chest region becomes so what you can say fat. This section of our body, means the person who is suffering from Cushing syndrome, this section of the body become more thick, and the leg is of same size, the leg is of same ratio, means no any increment or decrement in the leg size, in hand size, and in the head size. Okay, the size will be same. The body structure, the middle part, abdomen area, chest area, this all region becomes so fatty region, इसका एरिया बढ़ जाता है, इसी को बोलते हैं Cushing syndrome. सेकंड में है obesity, means increase the number of या amount of fat in the body, then it is called obesity, means overweight. Okay, next hyperglycemia, blood sugar level increase, then it is known as hyperglycemia. next ऑस्टियोपोरोसिस, बोन डेंसिटी डिक्रीज कर जाना, बोन्स का जो स्ट्रेंथ है वो डिक्रीज कर जाना, दैट इज द मीनिंग ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस. वीकनेस, कमजोरी होना. साल्ट एंड वाटर रिटेंशन, साल्ट और वाटर का जो रिटेंशन है वो मेंटेन नहीं होना. अगर हाइपर सेक्रेशन होता है तो उसमें साल्ट और वाटर का जो रिटेंशन कैपेसिटी है वो थोड़ा सा डैमेज कर जाता है. नेक्स्ट वन, थर्ड पार्ट इज ऑलरेडी वी हैव डिस्कस टू पार्ट, ए नंबर, बी नंबर. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस सी नंबर, सेक्स कॉर्टिकॉइड्स. सेक्स कॉर्टिकॉइड्स मींस एज ए इट एक्ट एज ए सेक्स हार्मोन. ओके, इन एड्रिनल कॉर्टेक्स it acts as a sex hormone during sexual activity. The body readiness of the body,
if any during sexual intercourse any changes occurs in the body, then it comes under cortex region. Okay, overgrowth of cortex in young children leads to a premature sexual maturity. Overgrowth of cortex, if the size of cortex part in adrenal gland is increased, then the child become what we can say that premature sexual growth मैच्योरिटी, उसके अंदर मैच्योरिटी थोड़ा जल्दी आ जाता है, सेक्सुअल मैच्योरिटी जल्दी आ जाता है, ठीक है, इस चीज को मत। तो हाइपोसेक्रेशन काउस एडिशंस डिसीज, एडिशंस डिसीज काउस करना, गूगल में आप लोग देख सकते हैं एडिशंस डिसीज के बारे में, वहां पे आपको समझ में आ जाएगा। फिर भी थोड़ा सा हम ये बता दें, हाइपोसेक्रेशन के दौरान ऑब्वियस सी बात है एड्रिनल ग्लैंड का जो सेक्रेशन है, जो कि कॉर्टेक्स रीजन से होना था, उसका सेक्रेशन कम हुआ और कम होगा तो एक एडिशंस डिसीज काउस होगा। दूसरा एनर्जी का लॉस होगा। एडिशंस डिसीज बोले तो कमजोरी होना, बॉडी पूरा कमजोर पड़ जाता है, वीकनेस हो जाता है बॉडी में। स्किन पिगमेंटेशन, स्किन पिगमेंटेशन मतलब कि ब्लैक स्पॉट हो जाना, जैसे कि तिल होता है ना हमारे बॉडी के अंदर, तिल, मोल मार्क जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, मोल मार्क बोले तो तिल, सबके हाथ में या कहीं ना कहीं बॉडी के पार्ट्स में तिल होगा, अपने लैंग्वेज उसको तिल बोलते हैं, तो वो कहलाता है ए मोल मार्क इंग्लिश में। ओके, सो मोल मार्क मीन्स एनी सिंबल, एनी डार्क पिगमेंटेशन, सो इसलिए बोल सकते हैं स्किन पिगमेंटेशन, मतलब कि पिगमेंट वहां पे ज्यादा है। पिगमेंट बोले तो मेलानिन का सिक्रेशन। लॉस ऑफ वेट, वेट में डिक्रीज हो जाना, ऑब्वियस सी बात है कमजोरी होगा तो वेट में डिक्रीमेंट आएगा, जैसे एक डायबिटीज पेशेंट को होता है, पूरा बॉडी गलना चालू हो जाता है। नॉशिया, अनकंफर्ट इन बैक ऑफ थ्रॉट, स्टोमक एंड अनईजीनेस। थ्रॉट बोले तो ये जो गला का रीजन है, इसमें थोड़ा सा अनकंफर्टनेस फील होना, बोले तो सही नहीं फील होना, खराश जैसा लगना कि कुछ है, कुछ गला में रखा हुआ है, इस टाइप का फील होना। हाइपोग्लाइसीमिया, ब्लड शुगर लेवल जब डिक्रीज हो जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं हाइपोग्लाइसीमिया। सेंसिटिविटी टू कोल्ड एंड पेन, जो ठंडा और दर्द है, बोले तो पेन, कोल्ड या हीट, उसमें थोड़ा सेंसिटिव ज्यादा हो जाता है बॉडी। नाउ लास्ट पॉइंट इज इट काउज इन्फेक्शंस टू द बॉडी इन कॉर्टेक्स रीजन and hyposecretion. If there is low secretion, then it cause infection. So there are several points I become side, so if you want to know any points, these points are from your Selena publication. So if anybody wants to know more points, then you can comment in comment section, no problem. And okay, thank you. If any points will be there, then I will discuss on next part. Okay.